The next point is individualism. In individualism, members of low context cultures such as North Americans tend to value individualism. It means that the members of low context cultures or the members of low context countries such as Germany, Denmark, USA, Norway, Sweden, Finland, Canada, all these countries, as I have told you, fall into the category of low context cultures. So in low context cultures, individualism is given more importance, and they tend to value individualism. They believe in individual. They believe in initiative and self-assertion results in personal achievement. यानी कि जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर कंट्रीज हैं या लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दे गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअलिज्म. वो इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं. उनका ख्याल है कि जो इंडिविजुअल है और वो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट इनिशिएटिव एंड सेल्फ असर्शन results in productivity, results in personal achievement, and they believe in individual action and personal responsibility. उनका ये ख्याल है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स में कि जो इंडिविजुअल एक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा बेटर है, और वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स अ लॉट. यानी कि अगर आप इंडिविजुअली एक्शन करते हैं देन यू योर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन. Members of, on the other hand, on the contrary, इसके बरक्स अगर आप देखें तो in high context cultures, just like in Asia, Arabs, Asian countries and China, Japan, these countries, or in high context cultures, they believe in collective efforts. They give more importance to collective efforts. ये ज़्यादा importance और emphasis देते हैं collective efforts पे. And are more collective. They are more collective. Members of high context cultures are more collective. They emphasize on membership in organization, groups, and actually, in other words, in simple words, they believe in teamwork. The people or the members of high context cultures believe in teamwork, group work, in teamwork, in organization, in groups, and in teams. They encourage the acceptance of groups' values, teamwork, duties, and decisions. They typically resist independence because they think that this independence or this individualism can bring competition and confrontation instead of consensus. क्योंकि उनका शायद ये ख्याल होता है कि अगर आप इंडिविजुअल को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दें और उस पर रिलाई करें और उसको कहा जाए कि वो डिसीजन मेकिंग करे तो वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा. और जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं दे टिपिकली आर अगेंस्ट इंडिपेंडेंस. वो इंडिपेंडेंस के खिलाफ इनका ख्याल है कि डिसीजन मेकिंग जो वो कलेक्टिव होने चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए और ग्रुप होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, ग्रुप्स में काम करना चाहिए. दिस थिंग इज दे गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू collective work. And in group oriented cultures or in high context cultures such as in many Asian countries, self assertion and individual decision making is discouraged. मतलब उनका ये ख्याल है कि इंडिविजुअल को जो है इंडिविजुअल्स शुड नॉट टेक decisions and individual decision making is discouraged in high context cultures because they believe in teamwork, they believe in collective work, they believe in organization, they believe in groups. On the other hand, as we have already discussed that in low context cultures, they believe in individual, they believe in personal responsibility, they believe in individual action. So this is the difference between this is called individualism. For example, यहाँ पे एक example से it will be more clear to you. In China, managers also focus on the groups rather than on individual. They prefer a consultative management style over autocratic style. Autocratic means dominating style. यानी कि चाइना में अगर आप बात करें और वहाँ पे कोई बिजनेस मैनेजर है तो वो प्रीफर करेगा कलेक्टिव वर्क को और कंसल्टेटिव मैनेजमेंट को एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. So this is called individualism. The next step is time orientation. Time orientation क्या है? In low context countries, for example in North America, time is considered, or in all low context countries, time is considered a precious commodity. Time is given more important. Time is given value.
In all low context cultures, time is given value, time is taken very important. They correlate time, because they correlate time, they relate time with productivity, efficiency, and money making. They do not waste other people's time, they do not keep people waiting for business appointments. And if they keep and they think that the keep people waiting for business appointment is considered a waste of time and rude. Like, on the other hand, if you uh, look at the high context cultures, there, for the business dealings or for the business appointments, the people are kept waiting for long time. यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, या जितने भी जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं उनमें लोगों को जो बहुत ज़्यादा वेट करवाया जाता है, द पीपल आर यूजुअली kept busy in waiting or kept waiting for business appointment. So in high context cultures, time in different cultures, you can say that the time may be perceived as an unlimited resources to be enjoyed. It means that in high context culture, time is taken or time is perceived as unlimited resource to be enjoyed. It means that in high context cultures, they do not give importance to time, they do not bother about time, they do not take time serious, they don't take it rude, they don't consider it rude to keep someone waiting. वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते कि अगर कोई बंदा बाहर बैठ के फॉर एनी बिजनेस अपॉइंटमेंट, फॉर एनी बिजनेस डीलिंग, अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट को या आपने जो है किसी को, इफ़ यू आर कीप देम वेटिंग, दे डू नॉट माइंड इन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. बट इन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, they take time money as a money. They value time. They not only value their own time, but they also value other people time, others time. वो दूसरों के time को भी importance देते हैं, उनको भी value करते हैं, and they do not keep people waiting for business appointments because they consider it's very rude, it's a wastage of time. But in high context cultures, people keep other people waiting, and they think that the time is an unlimited thing to be enjoyed. And the presentation of time and how it is used, it is learned culturally. It is culturally learned. Basically ये वो चीज़ है जिसको आप culturally जो है वो learn करते हैं. For example, people in Western cultures tend to be more analytical, scheduling appointments at 15 to 30 minutes intervals. But in Eastern countries or in Eastern cultures, they tend to be meeting or planning लॉन्गर मीटिंग्स. यहाँ पे बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं और जिसमें कोई जो है वो उसका कोई इतनी जो है उसकी रीज़न नहीं होती उसको इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड करने की. उसके एक रीज़न ये है कि दे डोंट टेक टाइम सीरियसली. हमारे यहाँ इसलिए भी टाइम को जो सीरियस नहीं लिया जाता, वी डू नॉट टेक टाइम सीरियस, कि इन अदर कंट्रीज़, इन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, वी डू नॉट want to waste other people time. And if the appointment or if the business appointment of the business meeting is scheduled at 9, in low context cultures 9 means 9. But in high context cultures like Asians, Arabs, China, Japan, 9 means it can be 10. So this is the difference between low context cultures and high context cultures, and that is time orientation. And the time presentation and the presentation of time is learned culturally. इसको हम culturally learn करते हैं, अब जिस culture में हिस्सा होते हैं. और secondly जो है, in high context cultures, if we keep people waiting, we think that we can show our importance to others in this way. अगर हम लोगों को इंतज़ार करवाते हैं, हम कहते हैं अच्छा अगर हम 9 बजे का टाइम है, कोई बात नहीं, हम 10 बजे जाएंगे. We think that the people, we take it as that the people will consider and we will be considered more important if we will go late. We don't take it as that we are going to waste not only our time but also other times. So in keep people waiting for business appointments specifically is considered waste of time and rude in low context cultures. But in high context cultures, it is taken as unlimited time, is taken as unlimited resource to be enjoyed. It is not bothered, इसको bother नहीं किया जाता. And यहाँ पे एक और इसमें आपकी resource pack में one example is given of North America and South America. A North American business person, for example, was kept waiting for 2 hours in South America. It means that when a person went for a meeting in a South America, because she belongs to a North America, in North American comes to the low context countries or low context culture, or in low context cultures, time is very important. Time is considered very important.
But when she went to South America for a meeting, she was kept waiting for 2 hours, and she was not offended, because she knew that, because she was familiar with South Americans are more relaxed concept of time. Just like high context culture people are very relaxed about time. And the next point is power distance. So what is a power distance? Power distance actually refers to a relationship between those in power and the subordinate in society. Power distance means the relationship between those who are in power and those in power and the subordinates in a society. So this is a relationship that is said to be a power distance. Power distance is one of the most important element of culture. The power distance index measures how people in different societies cope with inequality. In other words, how they relate to more powerful individuals. In high power countries, in high power countries, and you can say that in high context cultures, subordinates expect formal hierarchy and embrace relating authority or authoritarian power relationship. In lower power distance or in lower context culture countries, in lower context cultures, subordinate consider themselves equal to their supervisors. They confidently voice opinions and participate in decision making. It means that basically this is a relationship between those people who are the boss or who are in the power and the subordinate in a society. In a high context countries or in a high context cultures, जो subordinate होते हैं, they expect the hierarchy, they expect the authority, they expect the power, or they take it or they accept it. They accept the power, they take the power of their boss, or they take the power of their the person who is in the power, and they accept the formal hierarchy and they accept the authority, and because they are used to that authoritative power relationship. On the other hand, in lower power cultures or in lower power distance or in low context cultures, subordinate consider themselves equal to the supervisor. जो subordinate होते हैं वो अपने आप को supervisors के और अपने जो superiors हैं उनके equal समझते हैं, और they confidently take part in decision making, they confidently give their opinions, and they confidently voice opinions and participate in decision making. So that is a power distance in low context cultures and high context cultures. In high context cultures में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होता है उसको पता है ये मेरा बॉस है और ये अथॉरिटेटिव है, मैंने इसकी बात हर हाल में माननी है, और मैंने वो जो है वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उनकी अथॉरिटी को, और उनका जो अथॉरिटेटिव एटीट्यूड होता है, अथॉरिटेटिव पावर रिलेशनशिप जो है वो उसको साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं उनमें जो है वो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको पता होता है कि हमारे जो सुपरवाइज़र हैं हम और वो इक्वल हैं, एक ही पेज पर हैं, और दे कैन कॉन्फिडेंटली गिव देयर ओपिनियन, दे कैन कॉन्फिडेंटली वॉइस their opinion and participate in decision making. And the next and the last one is communication style. And what is the communication style? People in low and high context cultures tend to communicate differently with the words. To Americans and Germans, American and Germans are also the example of low context cultures. So it means that in low context cultures, words are very important, especially in contrast and negotiations. People in high context cultures, on the other hand, give more emphasis on the surrounding context than the words describing a negotiation. So ये वही बात है जो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इन द वेरी बिगनिंग कि कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स में जो है जब आपने कॉन्टेक्स्ट को मैंने डिस्कस किया तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि पीपल इन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स एंड हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स communicate in a different way. In low context cultures they give more importance to words, especially in contrast and negotiation, but in a high context cultures they give more importance to place and social environment and social business surrounding and social business environment and social environment or surrounding in which the business dealings takes place. So here is the example.
The Japanese may treat contracts as a statement of intention and assume change will be made as a project develop. जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब जापानीज इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जापान जो है फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. तो द जापानीज जो हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेटमेंट है वो उसको लेते हैं कि दे टेक इट एज एन इंटेंशन और दे थिंक दैट द चेंजेस कैन बी मेड इन द प्रोजेक्ट एज द प्रोजेक्ट डेवलप. जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसमें अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें तब्दीलियाँ जो है वो हो सकती हैं. दे एक्सपेक्ट दिस थिंग. सिमिलरली मैक्सिकन्स मे ट्रीट contracts and artistic exercise of what might be accomplished in an ideal world. मैक्सिकन्स इसको किस तरह से लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को? अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, दे टेक इट एज आर्टिस्टिक एक्सरसाइज कि एक एक्सरसाइज है जिसमें जो है वो दे आर गोइंग टू अकम्प्लिश, दे आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन एन आइडियल वर्ल्ड. दे डू नॉट नेसेसरली एक्सपेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू अप्लाई कॉन्सिस्टेंटली इन द रियल वर्ल्ड. और वो जो है वो बिल्कुल वो जो रिटर्न उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जब रियल वर्ल्ड में जो है वो आ जाते हैं तो वो उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करते. लेकिन जो अर्ब्स हैं, अर्ब्स अब किस में आते हैं? अर्ब्स ऑल्सो इन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. तो अर्ब्स जो है दे मे बी इंसल्टेड बाय मेयरली मैंशनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अर्ब्स में ये कि अगर आप बात पर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को मैंशन करेंगे तो दे विल श्योरली माइंड इट, दे विल कंसिडर इट देयर इंसल्ट. A person word is more binding. A person word is more binding. यानी कि अर्ब कल्चर जो है और अर्ब may be insulted और they take it or they consider it their insult by merely mentioning a contract. अगर आप बार बार उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन करेंगे they will take it as their insult. So that is the difference of cultures. सिमिलरली अगर हम इसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें नॉर्थ अमेरिकन में जो कि एक लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स है, तो इन कम्युनिकेशन स्टाइल नॉर्थ अमेरिकन वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. दे आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर सस्पिशियस ऑफ evasiveness and they distrust people who might have a hidden agenda. और वो जो है they give importance to the words, they take the words seriously, they take yes means yes and no means no, they take the words as their literally meaning, they take the literally meanings of the words. इन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो है वर्ड्स आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस एंड दे टेक द वर्ड्स सीरियसली. वहाँ पर जो है वो वर्ड्स को जो है वो सीरियसली लेते हैं और वो वर्ड्स को जो है वो इम्पॉर्टेंस देते हैं. और यू वुड सिमिलरली इन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. इन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स वर्ड्स आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस. और दे इन नॉर्थ स्पेसिफिकली इफ़ वी गिव द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन्स, तो नॉर्थ अमेरिकन्स जो हैं दे हेट और दे डिस्ट्रस्ट द पीपल हु माइट हैव हिडन एजेंडा. जिनका कोई हिडन एजेंडा होता है वो उसको जो है वो डिस्ट्रस्ट करते हैं, उसको जो है वो उनका ख्याल होता है कि ये पीपल जो है वो दीज आर नॉट द ट्रस्ट वर्थी. अगर इनका जो है अगर इनका वो मतलब नहीं है जो इनके वर्ड्स जो है वो कह रहे हैं, इफ़ दे डोंट हैव द सेम मीनिंग. So in the low context cultures, you would not expect to, you are not going to opposite your words. You are not going to do opposite to your words. So this is the communication style.